Another masterstroke of India's foreign policy and Dr. Jaishankar diplomacy. Your question, do we have multiple options? Answer is yes. Is that a problem? Why should it be a problem? If I'm smart enough to have multiple options, you should be admiring me. You shouldn't be criticizing. आप देख लीजिए वो जो जयशंकर साहब हैं जो उनके वज़ीर ख़ारजा, ठीक है, उनकी तकरीर देख लीजिए, उनके तकरीर का फोकस पॉइंट देख लीजिए. This is what he told Anthony Blinken, and that was very wise of Dr. Jaishankar. उसने कहा कि मेरे पास अगर ज़्यादा चॉइसेस हैं तो इसका मतलब है मैं स्मार्ट हूँ, तो आपको मुझे तारीफ करनी चाहिए ना कि भाई देखो स्मार्ट प्लेयर है. और ये बात जो उन्होंने की वो सिर्फ चाइना पर नहीं बल्कि जो मैंने कंट्रीज कहे उन सब पर ये बात लागू होती है. सीरियसली आई एम ए बिग फैन ऑफ हिम एंड मैं उसको सैल्यूट करना चाहूंगी. मैं बहुत बड़ी फैन हूँ एंड आई एम सो क्यूरियस टू सी हिम, टू वॉच हिम. मजे की बात यह है कि दोनों सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ब्लिंकन की और जयशंकर की आपस में ऐसी केमिस्ट्री है that both are calling each other as Tony and Jay. Good partners provide choices. Smart partners take some of those choices. अमेरिका मतलब क्या, अमेरिका चाहेगा तो भारत की इज्जत होगी. भारत आज इंडिपेंडेंट है, वो तो अमेरिका को आंखें दिखाता है. So ये थी डॉक्टर जयशंकर की. अगर आप उसको you watch it and वो जो I liked it a lot. नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर सर जर्मनी में मौजूद है, म्यूनिक कॉन्फ्रेंस को अटेंड कर रहे हैं. तो उनके साथ साथ काफ़ी सारे वर्ल्ड लीडर्स भी इस कॉन्फ्रेंस में मौजूद है. तो दोस्तों इसी दौरान जयशंकर के साथ जब एंटनी ब्लिंकन स्टेज पे मौजूद थे तब यूरोप के एक जर्नलिस्ट ने काफ़ी तीखा सवाल जयशंकर सर से पूछा. उस जर्नलिस्ट ने पूछा कि भारत मल्टीपल चॉइस वाले माइंडसेट रखता है, जहां भारत अभी भी भारी मात्रा में रशिया से तेल खरीद रहा है, तो क्या इससे अमेरिका और भारत के रिलेशंस अच्छे हैं? तब हमारे फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर सर ने उस जर्नलिस्ट को मुंहतोड़ जवाब देते हुए कहा कि भारत के पास बहुत सारे मल्टीपल चॉइसेस है और इससे क्या प्रॉब्लम हो सकती है. अगर कोई स्मार्ट है उसके पास काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स के लिए सोल्यूशन है, तो इससे दूसरे को सीख लेना चाहिए और लड़ाई के बदले उन्हें भी मल्टीपल चॉइसेस पे काम करना चाहिए और सबके साथ अच्छे से रहना चाहिए. और इसके साथ साथ भारत का मनी माइंडसेट सोच नहीं है, भारत इमोशनली भी सोचता है, जहां भारत के सिचुएशन और भारत के एक्सपीरियंसेस भारत को ही मैटर करते हैं. उन्होंने कहा है कि दिस इज व्हाट ही टोल्ड एंटनी ब्लिंकन and that was very wise of Dr. Jaishankar. उसने कहा कि मेरे पास अगर ज़्यादा चॉइसेस हैं तो इसका मतलब है मैं स्मार्ट हूँ, तो आपको मुझे तारीफ करनी चाहिए ना कि भाई देखो स्मार्ट प्लेयर है. एंड इंडिया कहता है जी मल्टीपोलैरिटी की बात करेंगे हम. वी डोंट वांट दैट दे शुड बी यूनिपोलैरिटी. वी डोंट वांट कि जी दो मुल्क जो है वो अपनी मर्जी से चीज़ें कर रहे हो. वी डोंट लाइक दिस. So I think that's how Dr. Jaishankar is defining international politics, where he's projecting, what is foreign policy? When I was studying foreign policy, when I was teaching foreign policy, it's basically you have to maximize your national interest in the international anarchic environment. आपके इर्द गिर्द अनार्किक एनवायरनमेंट है, यू हैव टू मैक्सिमाइज योर इंटरेस्ट. आपने अपने इंटरेस्ट को मैक्सिमाइज करना है, आपने अपनी ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना है. यू हैव टू फाइंड आउट कि कौन से ऑप्शन ज़्यादा अच्छा, कौन से ऑप्शन ज़्यादा अच्छा नहीं है. जैसे बैक few decades back we had an option, either we should go to the Soviet Union or we should go to the American bloc, and we decided to be in the American bloc at that time. So it's all about options. So ये डॉक्टर जयशंकर ने बेसिकली he was basically in other words he was educating or he was trying to give a lecture to Tony Blinken कि भाई मेरे पास ऑप्शंस हैं, मेरी ऑप्शंस की कदर करो. आई एम विद चाइना, आई एम वर्किंग विद चाइना, आई एम वर्किंग विद द रशियंस, आई एम वर्किंग विद यू, आई एम वर्किंग विद अदर मल्टीलैटरल पार्टनर्स. हम आपके साथ काम करना चाहते हैं. डू नॉट टेक अस एज इन अ वे कि सो आप उधर देखेंगे बॉडी लैंग्वेज जहाँ पर उसकी टोनी ब्लिंकन की, ठीक है जी, तो आपको पता चलेगा कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट बॉडी लैंग्वेज थी इन अ सेंस कि ही वाज हैप्पी इन अ सेंस के, या आई शुड नॉट यूज द वर्ड हैप्पी,
मतलब he was looking Dr. Jaishankar from a lens कि भाई ये क्या बंदा बात कर रहा है, और वो थोड़ा सा जिसे कहते हैं ना astonished भी था कि मतलब he is talking this way. So लेकिन वो he was listening him very carefully in a sense कि जर्मन तो चलो ठीक है, उस तरह उनकी पोजीशन नहीं थी जिस तरह अमेरिकन की है. जैसे कि फॉर एग्जांपल उन्होंने ब्रिक्स की बात की, उन्होंने कहा जी जो ब्रिक्स है, अब इन अनदर वे, so the Indians are justifying their position in the BRICS, which is the only maybe or the second maybe the multilateral bloc against the Western institutional dominance, which is आपकी जो है अब जो ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका जो थे, they are into it. वो ये समझ रहे हैं कि भाई हम क्यों वेस्टर्न डोमिनेंस के नीचे रहें, ठीक है जी. और अभी वो कह रहे हैं 30 ममालिक इसको ज्वाइन कर रहे हैं. सो इट मीन्स दैट वी आर क्रिएटिंग एन ऑल्टरनेटिव ब्लॉक, ऑल्टरनेट ब्लॉक हम क्रिएट कर रहे हैं, बट वी आर वर्किंग विद यू एज वेल. So Dr. Jaishankar he gave a very tough time to Antony Blinken. Trust me, if I was a student of politics and I was understanding कि भाई ये बंदा क्या बात कर रहा है, so the person was talking in a very shrewd, cunning style and telling Jaishankar, I have options. You are a very good partner. You are giving me choices. I am taking some of your choices and some of the ideas मैं उनको ले रहा हूँ, and then I am into it. Thank you very much. So why are you worried? So you should admire me. मेरी फुर्ती, मेरी होशियारी को admire करो यार. तुम क्यों jealous हो जाते हो कभी-कभी मुझे देख के? So ये थी डॉक्टर जयशंकर की. अगर आप उसको you watch it and वो जो I liked it a lot जो उसने कहा कि अच्छा look, they are enjoying and they are emerging as the only spokesperson of the global south, the Indians. The Chinese are there, but the Chinese cannot speak as a representative of the global south. Mr. Jaishankar, India has more of a multiple choice mindset. Would that be right? From non-alignment to, I think you may have called it, or somebody else called it, all alignment. So you can pick and choose alliances, but you can also pick and choose topics. On Russia, for example, you still buy Russian oil. Is that okay with your counterpart from the US? Everything is, your relationship is fine, you can do whatever you want, whenever you want? Okay, first of all... I mean, you're sitting next to each other. No, first of all, delighted to be here. And I couldn't find a better set of people to be with on the stage. So thank you for whoever put us all together. Your question, do we have multiple options? Answer is yes. Is that a problem? Why should it be a problem? If I'm smart enough to have multiple options, you should be admiring me. You shouldn't be criticizing. Now, is that a problem for other people? I don't think so. I don't think so, certainly in this case and in that case. Because, look, we try to explain what are the different pulls and pressures which countries have. And it's very hard to have a unidimensional relationship. Now, again, different countries and different relationships have different histories. If I were to look, say, between the US and Germany, it is rooted, there's an alliance nature to it. There's a certain history on which that relationship is grounded. In our case, it's very different. So I don't want you to even inadvertently give the impression that we are purely and unsentimentally transactional. We are not. We get along with people, we believe in things, we share things, we agree on some things, but there are times when when you're located in different places, have different levels of development, different experiences, all of that gets into it. So life is complicated, life is differentiated, and I think it's very important today not to reduce the entire complexity of our world into very sweeping propositions. Yeah. I think that era is today behind us. Yeah.